Namaskar. Welcome viewers to my YouTube channel, Wellness with Dr. Deeptimala Agrawal. It's a pleasure and honor to have on board with us today Dr. Vijayalakshmi Subramaniam. Welcome, Dr. Vijayalakshmi. She's Namaste. the Namaste. She's the professor and head of the Department of Otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology, for you, I'll tell, it is ear, nose, and throat. जिसे आम भाषा में हम लोग कहते हैं नाक कान गले का डॉक्टर. And she takes care of the head and neck part also. She's the head of the department at Yenupua Medical College, Mangalore. So my questions to you are will be very simple, Dr. Vijayalakshmi. What people face the simple issues and problems into their day-to-day life, और उन्हें आंसर्स नहीं पता होते. जैसे बहुत बार हम बहुत लोगों को देखते हैं, कान में पेंसिल डाल ली, पेन डाल लिया, इवन पिन, सेफ्टी पिन, फॉर दैट मैटर हेयर पिन, तो आपको उन्हें बताना पड़ता है आप इसे मत डालिए, इससे आपको नुकसान होगा. तो आप थोड़ा ये बताइए कि अगर किसी को कान में डिस्कम्फर्ट है तो वो क्या करे? क्या वो ईयरबड यूज करे या कोई ईयर ड्रॉप्स डाल ले? ईयर को घर पे क्लीन करने का कोई मेथड है? घर घर में तो सफाई, घर की सफाई अपने आप नहीं होती, हमको करना पड़ता है. लेकिन कान में जो है, इट हैज अ मैकेनिज्म, अपने आप अपने को साफ कर लेता है. इट हैज अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म. Yeah. सो ज्यादातर हमको कान की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड हाउ यू मे बी आस्किंग मी हाउ यू कॉलिंग इट अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म. व्हेन वी मूव आवर जॉज, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी chew, automatically whatever wax or whatever is there, the debris that is accumulated in the ear canal, it moves out and it is cleared off. फिर भी कभी कभी wax accumulate हो सकता है. It can get hard and it can get really impacted. जब किसी को discomfort हो, मतलब कान में wax accumulate होने की वजह से कभी किसी को दर्द होता है, किसी को कान सुनाई नहीं देता है, sometimes they have ringing sensation, कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं कान से, तभी उसकी सफाई करने की जरूरत पड़ती है. लेकिन कभी भी never use the commercially available earbuds, or and never pins and even feathers of the hen or the Yeah. birds should not be put into the ears. क्यों नहीं करना चाहिए? Because the ear canal is not straight, it is S-shaped, and when you use an instrument on your own to clean your ears, you will end up injuring the ear canal, or you will end up perforating the eardrum. So if it causes discomfort, please approach a professional, and डॉक्टर की सलाह लेके ही उसकी सफाई करनी पड़ती है. डोंट डू इट ऑन योर ओन. The message is very clear पब्लिक के लिए. कान की जो सेल्फ क्लीनिंग होती है, पर अगर आपको किसी भी समय को डिस्कम्फर्ट ज्यादा महसूस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप अपने ईएनटी के डॉक्टर के पास जाएं. अपने आप से अपने कान के अंदर कुछ नहीं डालें, क्योंकि जैसा डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने बताया, इससे परफोरेशन से मतलब अगर ईयर ड्रम में छेद हो गया तो आप बहरे भी हो सकते हैं. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक छोटे बच्चों के साथ मदर्स को ये कंप्लेन होती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने मुंह से सांस लेते हैं, तो इसके लिए आप कुछ एडवाइस करेंगे? So here, first thing I would like to tell mothers is, सर्दी होने के टाइम छोटे नहीं बड़े भी मुंह से सांस लेते हैं. The reason is the nose is connected to the ears by means of a tube that we call as the eustachian tube. तो जब भी नाक में कोई भी इंफेक्शन होता है, तो ये ट्यूब की लाइनिंग भी, उसमें भी सुझाव आ जाता है. तो उसके वजह से नाक से सांस लेना मुश्किल होता है, कान में भी दर्द हो सकता है. बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस ट्यूब, दिस इन्फेक्शन स्प्रेडिंग फ्रॉम द नोज टू द ear, they will have discomfort in the ear. And because the nose is blocked because of the infection, the children will breathe through their mouth. But in children,
इट इज वेरी कॉमन, जैसे हमारे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, नाक के बैक साइड में एडिनॉइड्स, दे आर सिमिलर टू द टॉन्सिल्स। एडिनॉइड्स नाम का लिम्फेटिक टिश्यू होता है। इट इज वेरी कॉमन फॉर चिल्ड्रन टू हैव एनलार्ज्ड एडिनॉइड्स। जब ये एडिनॉइड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है तब उनको नाक से सांस सांस लेना उनका उनमें उनको दिक्कत होती है, तो वो मुंह से सांस लेते हैं एंड दे स्टार्ट स्नोरिंग एज वेल। तो खराटे मारने का वो आदत पड़ जाता है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम one has to consult a specialist and it may require surgery as well, क्योंकि अगर adenoids को हम एड्रेस नहीं करें तो the ear block will happen and their hearing abilities, it can affect their hearing abilities, and what will happen overall is the child will not be able to hear the teacher at school. So the performance at school will come down. The eardrum will get, उसमें जो कान में negative pressure आ जाता है, eardrum will get sucked inside, and so it will get stuck to the middle ear, the medial wall of the middle ear, what we call as adhesive otitis media, and it becomes very difficult to treat. And they can also have formation of things like cholesteatoma and all that because of the adenoid eustachian tube pathology. So that is why if children have mouth breathing or snoring, if it is only during the colds, then one need not worry. But बाकी के टाइम में भी अगर बच्चा मुंह से सांस लेता है, खराटे लेता है, उसको अगर वो he doesn't respond when you call once or twice, he or she doesn't respond, you know, they have some kind of problem with their hearing ability, it is always good to consult, get evaluated and take the next course of action. यस जी। तो जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे नाक के रास्ते में पीछे एडिनॉइड्स होते हैं। तो एक इस पे भी अवेयरनेस जरूरी है। अच्छा, अब एक मैं पूछना चाहूंगी, जो इतना मोबाइल फोन्स का यूसेज है, क्या इससे हमारी ईयर्स डैमेज होते हैं? Yes. Not just mobile phone, even जो हम पर्सनल म्यूजिक डिवाइसेस यूज करते हैं या MP3 प्लेयर्स, हम्म मोबाइल फोन में तो हम सिर्फ उसको किसी से बात करने के लिए यूज करते होंगे, लेकिन मोबाइल फोन से ही हम लोग म्यूजिक भी सुनते हैं, और ये जो ईयरफोन्स हैं हम हमेशा पहने रखते हैं म्यूजिक सुनने के लिए। हम्म। What happens is we are there is an ambient noise, and when there is वो जो हमारे सराउंडिंग्स में, अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर का साउंड को हम कम करने के लिए हम इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू हियर द हॉर्न्स एंड हम्म the noise of the traffic outside. So we are increasing, doubling the amount of noise that is getting into our, that is touching our ears. And constantly using these earphones या Bluetooth, ये सब यूज करने से कान को डैमेज हो सकता है, इनर ईयर को डैमेज हो सकता है। बट what we need to do, I'm not telling people not to listen to music, use the mobile phone for communication alone, and म्यूजिक हम लोग अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस जो है म्यूजिक प्लेयर्स, वो एक्सटर्नल स्पीकर से यूज करो, एंड कीप द वॉल्यूम अंडर मीडियम रेंज। डू नॉट, ये जो डीजे पार्टीज या शादी के पार्टी में सुनते हैं घंटों भर के लिए, हम लोग जब ऐसे पार्टीज में more than 80 decibels, if we are listening to any kind of speeches or whatever, any kind of noise exposure continuously, then there is very high likelihood of damage to the ears, and high light matlab it can cause sensory neural hearing loss. So one has to be careful, and even children, it is not advisable that they use their these mobile phones or whatever devices not longer than 20 minutes to half an hour for listening to music. Preferably without the earphones, open listening is better with the speakers. सो बेसिकली जो मोबाइल ने हर चीज को रिप्लेस कर लिया है, वो चीज अच्छी नहीं है। मोबाइल को एज फोन ही यूज करें, पर ऐसा हो नहीं रहा है आजकल समाज में। आने के लिए भी, घड़ी के लिए भी, लैपटॉप, मतलब एवरीथिंग इज इन मोबाइल। और जो सबसे डेंजरस चीज लगती है सड़क पर चलते समय, व्हेन यू आर ड्राइविंग, यू सी टू व्हीलर पे जो राइड कर रहा है उसने कान में अपना म्यूजिक लगा रखा है। पीपल क्रॉसिंग द रोड, दे विल ऑल्सो बी वियरिंग दिस, सो दे आर ओब्लिवियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। सो इस सब के यूसेज से एक्सीडेंट रेट्स भी काफी
बढ़ रहे हैं। तो नॉट ये ओनली देयर कंसंट्रेशन डिप्स, अगर उनको फोन पे बात करना है तो दूसरी तरफ से जो आदमी बात कर रहा है उसको सुनने के लिए ही हैज टू रेज द वॉल्यूम, या तो कान को और भी नॉइज एक्सपोजर हो रहा है, कान तो डैमेज होगा ही, बट एज यू सेड दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, तो एक्सीडेंट रेट ज्यादा हो सकता है। एंड यू नो वी हैव हैड इवन people who are using their phones while walking or while climbing the stairs, they trip and fall down या because they are not able to concentrate, they miss the step, they trip and fall down, so head injuries have happened like. यस यस, बिकॉज ध्यान आपका कहीं और है ना, आपको फोकस जब हटता है तो एक्सीडेंट और दुर्घटना होती है। तो हमने हियरिंग के बारे में तो बात की, हाउ टू बेसिकली प्रोटेक्टेड, क्या प्रिकॉशंस हैं। अब लास्ट थिंग, अपनी वॉइस का कैसे ध्यान रखें, थ्रोट का, वॉइस का। Voice, like any other musical instrument, the voice is a musical instrument. Our vocal cords are nothing but a musical instrument. तो उसका we have to really take a lot of care. या सबसे पहले we should drink at least minimum 8 glasses of water daily. क्योंकि the water is providing the lubrication to the vocal cords. So that is the first thing. Next is, अगर हमने ज्यादा तली हुई चीजें वो सब खाई और तीखी खाई, we develop an acid reflux and that can damage the vocal cords. So we should take care of the acid reflux. We should not we should not have you know diets. Take care of your diet in the sense you should not eat things which are likely to cause acid reflux. We each one of us have certain items which will cause that reflux. We know that we have to identify that, and preferably we should avoid that. And the third aspect is screaming, shouting, louding. Cricket match देखने गए तो start screaming loudly because your favorite cricketer has come. Uh, and then you attend a wedding, you're so happy, you shout. So screaming is screaming and shouting is another one which can damage your voice. Of course, continuously talking also can cause a problem, but then if you're maintaining the pitch, then you will still be able to manage things. But when you shout, when you when you are speaking loudly, like giving big speeches and all that, for using your voice loudly, you're likely to cause damage to your voice. But the fourth thing, smoking, alcohol, these can not just cause direct damage to your vocal cords, they will increase the acid reflux. And as everybody knows, इन दोनों चीजें से वो not just rest of the body, vocal cords का भी कैंसर होने का chances बहुत ज्यादा होता है. So these, so it's not just smoking, it's not just cigarette smoke, any kind of smoke. हम लोग ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पे भी स्मोक एक्सपोजर होता ही है, दैट इज अनअवॉइडेबल, but exposure to fumes of any kind can affect the vocal cords, so we need to take care. But most important is, when we talk for long hours, say 1 or 2 hours, we should give break to the voice. Just like कोई भी machine run होते जाता है तो उसको rest देने से वो ठीक हो जाता है, you can use that machine for longer. Same way, if you want to use your vocal cords for longer, you have to give it adequate rest, keep it hydrated. Hydration is the most important. Avoid acid reflux, and of course, offending agents like smoke, alcohol, these things have to be kept aside completely. सो ये बेसिक टिप्स हैं अपने गले को और आवाज को ठीक रखने के लिए। गला ठीक रहेगा तो आवाज ठीक रहेगी। बहुत लोगों को इतनी ड्राइनेस रहती है, तो जो वाटर इनटेक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने बात की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, सर्दी के मौसम में, ठंड का मौसम होता है, पीपल फॉरगेट दैट दे हैव टू ड्रिंक वाटर, प्यास नहीं लगती है। गर्मी में तो लोग पी लेते हैं, so you have to keep an alarm probably and drink 8 to 10 glasses a day. या So important. विंटर्स में तो एट टाइम्स इट इज कि आप पूरा दिन बिना पानी के निकल जाता है। इट हैपेंस विद मेनी ऑफ अस जी। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने हमें बहुत अच्छे बेसिक टिप्स, बेसिक एडवाइस दी है।
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस जानकारी से फायदा होगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, you can put it in the comment box. We will try to answer. And thank you so much, Dr. Vijayalakshmi, for sparing out your time and talking to our viewers. Thank you so much. Namaste. Namaste.